अनन्या साउंड आपकी यस सर। साउंड में डिस्टरबेंस है आपकी। साउंड में डिस्टर्बेंस है। अभी ठीक है सर? ठीक है, कंपन हो रहा है अपना। यस सर। इस साउंड जब आप माइक ऑन कर रहे हो तो काफी ज्यादा वो आ रहा है, पीछे से नॉइज आ रहा है। अनन्या इको हो रहा है। यस अनन्या, अनन्या हाँ स्टार्ट करो। सर भी आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए, स्टार्ट करो। Okay, sir. A very good evening to everyone present here. Today we inaugurate our eagerly awaited machine learning course from participants from both DU and non-DU colleges, ensuring inclusivity. Remarkably, this course offers the lowest pricing across whole Delhi University, emphasizing our commitment to accessible education. Throughout this journey, we'll delve into fundamental principles, data processing, and practical application of machine learning. From healthcare to finance, this course prepares participants for real world challenges. With classes starting today, I urge you to seize this opportunity, dive into the world of machine learning, and unlock your potential. Let us embark on this journey together, shaping the future with innovation and discovery. It is an honor and privilege to have in our between today our esteemed college principal, a dedicated leader who has wholeheartedly committed to provide our college students with the highest quality education and ensuring their success in all facets of life. Without further ado, I extend my warmest invitation to Professor Narendra Singh Sir to share his profound insights on this auspicious occasion. सर माइक ऑफ है आपकी। ओके, नमस्कार।
Namaskar, sir. I welcome you all to this inaugural ceremony of this certificate course on foundation of machine learning. बड़ी लंबी जर्नी है ये भी। प्रोफेसर गुरप्रीत जी हमारे साथ हैं। हम दोनों ने मिलकर ऐसा डिसाइड किया था कि कॉलेज में एक स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर ऐसा करके स्टार्ट करेंगे और उसके थ्रू डिफरेंट कोर्सेज जो स्किल से रिलेटेड हैं वो सब स्टार्ट करने हैं। तो उसका ये अपना जो फर्स्ट कोर्स है वो स्टार्ट और कर रहे हैं हम आज। तो उसके लिए मैं डॉक्टर धीरज को भी बहुत बधाई दूंगा, कंग्रेचुलेट करूंगा कि जिन्होंने ये काफ़ी एफर्ट इसके लिए लगाया और आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज का जो टाइम है उसमें स्किल का बहुत इम्पोर्टेंस है। आप तैयार हो जाएं इंडस्ट्री में जाने के लिए, आगे काम करने के लिए, तो कॉलेज करिकुलम के साथ साथ तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में और वो आगे हेल्प भी करने वाले हैं। तो ये स्टार्टिंग है, जर्नी स्टार्ट हो रही है, पहला कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। सबको मेरी शुभकामनाएं हैं और स्पेशली जो टीम इसमें लगी है, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much, sir, for your kind words and your blessings. Now, everyone, please join me in extending warm welcome to our guest for today's event. With an illustrious career spanning over 25 years in academia, Professor Dr. Gurpreet Singh Tuteja sir brings a wealth of expertise as the Joint Dean of Students' Welfare. Thank you, Ananya. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Respected Principal, Professor Narendra Singh ji, Professor P.K. Shishodia ji, Dr. Dheeraj, other faculty members, trainers of the program, and dear students. Indeed, it is a matter of privilege for all of us that this college is starting a new horizon for the students, and it is an honor for me to address you today on the topic of machine learning. The machine learning is a field which is not only transforming industries but also shaping the future of the society. You must be eager to know that what is machine learning, why it is called as machine learning, why it is not artificial intelligence, what is the difference between machine learning and artificial intelligence. Are we heading towards artificial intelligence after this learning this machine learning? Yes. You are going to start with a subset of the subject which is called as machine learning, and it is a subset of artificial intelligence. In this, you are going to learn that how you can use the data, and using different algorithms, you are going to parse the data, you are going to understand the data, learn the data, and make informed decisions or predictions based on this data. Now, the definition is very simple, which says that you are going to parse the data, you are going to learn from the data, and then you are going to predict. This seems to be very simple definition, but when you are involved into this, you will find that there are hundreds of algorithms which maybe you will be applying on uh, different fields. The scope is not limited to healthcare, as Ananya was saying, that it is not limited to healthcare, finance, marketing. It is much more than what you can think of right today from the first minute of this program. You will be using these algorithms in data analysis, using the algorithms for pattern recognition, and then decision making. Let me give you a few examples so that you will be feeling encouraged, and you will be able to say that
कि yes, I'm starting a good course and it is going to make my future. So the first use, I see it in healthcare. You must have seen that these days the health is very important because everybody, whether somebody is young or in the middle age or in the older age, they are having certain disease. Now, diagnosis of the disease depending upon their you know different types of diagnosis test, their treatment plans, their medical image analysis, all these are required. And once you have those diagnostic tests, doctors are able to predict what kind of disease one will be suffering after certain age. They can easily predict whether you will have cancer or not, whether you will have diabetes or not, whether you will suffer from high blood pressure or not. So it is not limited to healthcare. Even if you see in the finance, there are a lot of changes in the finance also these days. Accounts, simple accounts are the older things. Fraud detection is being done through machine learning. Algorithmic trading, you must have heard this word, that now in the stock exchange people are using algorithmic trading. They trade using machine learning and make a lot of money out of this. Then your personal credit score, which depends upon your past whatever expenses you have done, how you have been paying to the bank. That becomes very important. So I'll not be touching every each and every field, but I can say that whether you are in marketing, whether you are in retail, or in transportation, or in manufacturing, or in the entertainment field, because you see these days Netflix also uses your personalized, requirement, that what kind of movies would you like to see. That is called as a content recommendation. That is also being done through machine learning. So they easily do the audience analysis, what kind of interest they have, and they present that kind of movie to you. It is also used in agriculture, energy consumption, cyber security. So in all, if I say that machine learning has an incredible promising future. You will be learning sophisticated algorithms here, and then you will become capable of solving complex problems. So I feel that you will be future ready after doing this course, and you may get certainly professional skills in machine learning, in data science, and finally artificial intelligence. And believe me, many of the companies are looking for such experts who can deploy machine learning models and interpret their different kind and interpret and solve their different kinds of problems which they are facing in real life. So, concluding my this short lecture, I'll say that machine learning, which is a powerful technology, and you are going to handle it very soon. You will understand the scope, application, and future trends, and then believe me, you one day you will become a right personnel for good companies. I must congratulate the entire team of Zakir Husain Delhi College team for giving this opportunity to our near and dear students in a time when it is most required. My gratitude to principal of the college being visionary, and to the IQAC convener, Professor P.K. Shishodia, for making this program, for starting this program, initiating this program. So thank you so much, and all the best for the entire team who are starting this course. All the best, dear participants. Have a great day and have great sessions. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wonderful words and informational insights. Now, I would like to hello. Yeah, and I would like to introduce Professor Dr. Shikha Mehta, ma'am, a renowned authority in artificial intelligence and professor at JAPI Institute of Information Technology, Noida.
With an illustrious teaching career spanning over 19 years, Dr. Mehta ma'am holds a doctorate from the University of Delhi itself and has contributed significantly to the field. She is a sought after speaker at prestigious events such as UGC, ATAL, and TechKip sponsored FDPs and workshops as well. With two authored books and around 70 research publications, her expertise enriches our webinar today. Let's welcome Dr. Professor Shikha Mehta ma'am to introduce the course and start with all the insights. Thank you. Thank you, Ananya, for such a detailed introduction. Thank you so much. And I'm really very thankful to the principal, sir, and the other dignitaries for organizing such event and starting such kind of programs which are very useful for the students in this digital era because they all are using the various applications where machine learning is being widely used. And for the mathematics students, I'll say, so they are already part of the machine learning group because your maths subject that you think that you don't know what is computer science, but math is basically the heart of computer science, or you can say maths is basically the heart of the machine learning. So today we are going to start with the how you can say the mathematics plays what kind of role in the machine learning and how it is very useful for the mathematicians to learn the machine learning. So I'm going to start the session accordingly. All right. So can we start now? Yes, please. So shall we start the session? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Please go ahead. Okay. Okay. So I'm going to share my slides. Are my slides visible? Yes, please. Can anyone Yes, confirm? Yes, ma'am, your yes, slides ma'am. are Yes, visible. ma'am. Oh, okay, okay. So today we are going to start with the topic machine learning for mathematicians, right? So as I said that the mathematics plays a very important role in the machine learning. And if you want to go into the field of machine learning, you want to be an expert in the field. So in that case, mathematics is going to play a very important role. And you are, if you are from the field of mathematics, you are going to have an edge over the other machine learning experts, right? So let us begin. So I'm sharing certain statistics like you see. So what is the world population today? It's around 8.1 billion. And according to the worldwide digital population that we see, so out of this 8.1 billion population, 5.3 by 5 billion people are the internet users. And on the internet itself, out of this 5.04 billion people are the social media users, right? So that means it amounts to almost more than 65% of the population which is on the internet or which is using the social media applications, right? So I would like to uh, have the interaction with all the participants, and I want that you just, if I'm asking something, you just participate by unmuting yourself and you can answer me whatever I'm asking, right? So don't just listen, please interact. Okay. Now, what kind of social media applications you people are using? Anybody who can tell me? Ma'am, I use WhatsApp for daily messaging, Right. and sometime I use Instagram for time.
for time passing. Yeah. To So see for some reels, entertainment, we and can say for entertainment, you yes, ma'am. use the And for some further studies, I use YouTube to clear my right, theory and doubts. right. That's it, So ma'am. so that means, see, so okay, you tell me how many social media accounts you have. Let's begin with the one person. So how many social media accounts you have? Around 4 or 5. Around 4 or 5, sure. I guess Ma'am, they are going around to be more 4. than that. Ma'am, I have 4 accounts. How many Gmail accounts you have? Ma'am, I have 5 mail accounts, ma'am. So that means you have, right, 5 mail accounts plus you can't be just on 5 social media applications. Okay. Would you like to switch on your camera so that we can have a discussion, face-to-face discussion, right? Yes, please. So you better switch on your cameras, right? So we can have face-to-face discussions also. So you'll find it very interesting. So how many accounts you have then? Who was speaking? Uh, Okay, Ma'am, Hardik. I was speaking Hardik. Yeah. Hardik, then Uh, 5 Gmail accounts plus you are on and the ma'am, 4 social media accounts. 4 only. No, I can't believe that. So let's count No, ma'am, I YouTube. am not that kind of person who uses social media a lot. Okay, you I don't. don't have many friends. That's why. Okay. So you use YouTube, you use Facebook. No, ma'am, I use YouTube, Instagram, WhatsApp, Okay. and I have used Twitter. Okay. So you are online. So almost 9 accounts you have. 5 Gmail Yes, ma'am. accounts, along with that 4 other social media accounts. Okay. Yes, ma'am. Next, anybody else who would like to share? The one who is very fond of being online. Yes. Well, I can say that I am Yeah, online for Syed. something. It's So Fahim. I'm hi. yeah. Just please. Yeah. I have around seven email accounts, and I am active on around 8 online platforms. Right. Great. Yeah. Okay. Anybody else who would like to share? 6 Gmail accounts and approx 7 social media platforms. Around 13. Right. Okay. Anybody else? Yeah. Anybody else who would like to share? Just one more, then I'll proceed further. Ma'am, 4 Yeah. Gmail account and 4 and 5 social media platforms. So how many total accounts you have? 2 9. only. 9. Okay. Yes, Rajkamal? 2 Gmail accounts and around 4 or 5 other accounts. Okay. So, okay, let's say around 7 to 15, we got the figure. So, on an average, we can compute. So, on an average, so the number of online accounts varying with this particular set of sample of 5 people, you can say. So, they vary from 4 to 15, right? So, and according to the studies also, according to the studies, every user on an average is having 7 to 9, 8 online accounts, right? And what does it mean when we are saying we have the online account? So what do we do on the Instagram? We are uploading the images, the pictures. What do we do on the YouTube? We are uploading the videos, right? So that means every person who is on the Instagram, every person who is there on the YouTube, either they are listening to the videos or they are watching the pictures or they are uploading the content, right? So that means, let's take the example of a Facebook. So what all content that you see on the Facebook as soon as you log in? Yes, Ashish? Anybody who will tell? Ma'am, some short reels, Okay. and ma'am, some live streams, Hmm. and some posts and comments on them. Post That's and it. comments, then some pictures, right? Ma'am, Some videos. ma'am, pics comes in post and videos like Yeah, that. मतलब but the post में आपका text भी आ जाता है, pictures भी आ जाती हैं Yes, और ma'am. images भी Yes, आ ma'am. जाती हैं, isn't it? So from where this data is coming up, कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये data? Ma'am,
जहां तक हमें बताया, मेरे को पता है मैम, सेंडर हाँ डाटा अपलोड करते हैं, रिसीवर डाटा डाउनलोड करता है, उसमें राइट। लोड होता है। अब हम वो बेसिक यही स्टोर है कहाँ, सी लाइक व्हेन वी हैव आवर लैपटॉप, सबके पास लैपटॉप्स हैं। मैम, वो सर्वर्स में स्टोर होता है, जिस राइट। जो एप्लीकेशन के सर्वर्स होते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि सारा का सारा डेटा जो है सर्वर, सर्वर क्या है, सर्वर भी एक मशीन है हमारे लैपटॉप की तरह, राइट। उसकी भी कुछ प्रोसेसिंग पावर है, उसके पास भी कोई स्टोरेज है, राइट। तो अब ये जो स्टोरेज है, ये कितनी स्टोरेज है आपके हिसाब से? आप साइमल्टेनियसली कितने लोग फेसबुक पे लॉगिन कर रहे होंगे? आप मैम अकेले तो कर बिलियन। नहीं रहे एक टाइम पे, isn't it? Yes, ma'am. At one point of time, at one point of time, millions of users are logging to the Facebook. They are going through the content on the Facebook, they are going through the content on the Instagram, or they are going through the content on the YouTube, or any of the, you can talk about any of the social media applications, right? So how all this is happening, राइट, एंड इट इज हैपनिंग सो सीमलेसली कि कभी आपको ऐसा लगा कि फेसबुक पे आपने लॉगिन किया और आप वेट किए जा रहे हो, लॉगिन ही नहीं हो रहा है? एनीबडी मैम ये हु हैज हाल फिलहाल एक्सपीरियंस हुआ था। मैम ये वन हाल डे फिलहाल फॉर हुआ। 1 आवर, 1 आवर? यस मैम, हाल हुआ था मैम। फिलहाल में, हाल फिलहाल में जो हुआ था वो कितने ड्यूरेशन के बीच में हुआ था? फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी? अगर हम कहें कि जो रिसेंट अराउंड हुआ वन है, टू टू आवर नो नो, 1 to 2 आवर हुआ, लेकिन क्या वो एक साल में एक बार हुआ या 5 सालों में एक बार हुआ? दैट मैम, वे, नो आइडिया मैम। मेरे नो पेरेंट्स ने आइडिया। फेसबुक, मैम पेरेंट्स फेसबुक चलाते हैं, उनके साथ पहली बार ही हुआ, तो मेरे को भी तब पता चला। सो राइट, सो दैट मीन्स कि उससे पहले कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया जितना भी वो यूज करते हैं, राइट। सो nobody is able to recall, so you can understand the fault tolerance capability of these systems, कि कितने फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स हैं वो। और जो है कि किसी को ये पता ही नहीं चलता अगर पीछे से सर्वर डाउन होता है, ऐसा पहली बार हमने अपने लाइफ टाइम में देखा, मान के चलते हैं, राइट। सो मे बी इन द 10 years or 20 years इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो अब आप फेसबुक पे जाते हो, कितने तरह के, आप लोगों ने देखा है कि आपके पास फ्रेंड्स की रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, यू मे बी नोइंग दिस पर्सन, मैम यू मैंने गेट, फेसबुक नहीं चलाया, बट इंस्टाग्राम पे ऐसा होता है, यू फ्रेंड गेट इट ऑन द फॉलोइंग इंस्टाग्राम, रिक्वेस्ट आती है मैम। आती हैं। सो वो किस बेस पे आ रही हैं? मैम अगर हमारा अकाउंट प्राइवेट है तो मैम, जो हमने अपनी पोस्ट शेयर करी इंस्टाग्राम पे वो उनको विजिबल हो, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट में मैम प्राइवेसी हम्म ऐसी है कि अगर किसी ने आपको फॉलो नहीं कर रखा है हम्म तो मैम वो आपकी पोस्ट नहीं देख सकता है, आपकी स्टोरीज नहीं देख सकता है, आपके हाइलाइट्स नहीं देख सकता है, आपसे राइट। रिलेटेड अगर ज्यादा अगर वो डिटेलिंग नहीं निकाल पब्लिक, सी पाएगा। प्राइवेट में भी आपका जो अपना फ्रेंड सर्कल है, राइट, सो you're नॉट योर वन लेवल फ्रेंड्स तो आपके होंगे ही, राइट, यस मैम, यस मैम। राइट। सो उन वहां से रिकमेंडेशंस आती है, इसका मतलब आपको जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, आपका जो भी आप कंटेंट अपलोड करते हो या आप कंटेंट को देखते हो, वो ट्रैक किया जाता है। मैम इन्वायरमेंट से आ रहा है मेरे। So that means your whatever environment you are given, that is under the control of the application that you are यस using, मैम, यस मैम, and that is being tracked. So your data यस मैम। is being analyzed. What are you going through? आपकी जितनी भी activities हैं, they are being analyzed. Whether you are on the Facebook, you are on the Twitter, that is called X now, right? And then whether you are on the Instagram, any application you talk of, whether you talk of the any of the Gmail accounts, everywhere you are being tracked, right? All your activities, they are being analyzed, all your behavior is being analyzed through all the activities that you do. You click on a comment, you like or dislike any of the product, any of the service, any of the anything that you are doing online, everything is being traced, right? So we were talking about the number of users, right? So that means on the internet, we have around 60% of the world population is on the internet and on using the social media applications. So that means we need to have so much of infrastructure to handle the data which is being uploaded
by all these users which are online. We never give a thought कि मैंने आज मैं पार्टी में गया, मैंने इतने सारे पिक्चर्स खींची, मैंने सब अपलोड कर दी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे. We don't have to give a second thought to it कि ये डेटा जो है कभी कभी व्हाट्सएप कभी भी मुझे जो है इंस्टाग्राम में ये नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि it is going out of memory, right? So I'm getting the space विदाउट एनी लिमिटेशंस. मेरे लैपटॉप पे मेमोरी जो है डाई हो जाती है, मेरे मोबाइल में मेमोरी डाई हो जाती है. I have to buy the space on the cloud, but on all these social media applications, they give me the unlimited access to the storage, and I don't have to give a second thought to it, right? So that means they are providing such an infrastructure. So, and they want all of you to be there all the time. Your activities are being traced, right? So all these activities are being traced. What is the purpose behind that? Then how these activities are being traced, and why do they want to trace your activities? This is the prime question, right? So yeah, yes please, Said, you can answer. Oh, no, ma'am. I thought you were asking a question. Sorry. Sorry to interrupt. Yeah, that's fine. That's fine. You can answer what you felt like. Okay. Right. So here you see the number of social media user entities, 5.404 billion. Then we have 1 quarter change in the social media identities. Then you see year on year change in the social media user identities. So number of females on the which are using the social media, number of males. So 46% are the females, 53% are the males which are using the social media content. And average number of social media platforms which are used each month, around 6 to 7%, right? And social media entities, the total population, we know it is 62.3%, right? So this is how, since so much of population is there on the internet, so all these social media companies, they have, you can say, large amount of data with them. That means they have the details of all these, you can say, 5 billion population. They have the complete profile, their working history, what do they do, all their activities. So they have large bunch of data along with them. And that's why in the current scenario, so the companies, they call it that data is the new enterprise currency. Whosoever is having the data is considered to be the richest person in this particular digital universe. The world's most used social platforms, you see, the Facebook, it is the maximum used platform. Then we have the YouTube, then we have the WhatsApp, Instagram, TikTok, WeChat. So you see, we have a long list, right? So many users are there who are using it, right? So if the people are using the Facebook, that means the Facebook is the richest, the owner of the Facebook is the richest person, because the maximum number of users on this earth are using the Facebook, right? So he or she, they are having the data of all these users, right? So if they are having the data, they can do anything with this particular data. So if we have the data, what do? How, see, Facebook is what? A company है Facebook, उसका भी तो ये business है ना. तो business means making the profit. So how they are going to utilize the information of the users to make the money? And this is where the analytics come into the play. So they do the analytics, they sell the data, right? After the analytics, they are driving useful insights, and then they use these insights for making the useful decisions which can further increase their profits. So they are, see, most of these companies, they are not charging us, they are charging the companies for their advertisements, because they are providing a platform to the other companies where their product or service will be exposed to the maximum number of users. And this is their business model. So Facebook is not any of these social media platforms. Do they charge any money for the registration? Yes, anybody? No, ma'am. So they are free. Yes, ma'am. So that means, just remember, if everything is free for you,
that means you are the product. So that means on these social media platforms, we people are the product, right? So they are selling us. How they are selling us? Why? Provide. So they are all, majority of these companies, they are making money through their advertisement model. We are there, they are sending us the advertisements based on their target audience. So whosoever is buying the space, whosoever is buying the advertisement space, so all those you can say users, they are being uh, targeted for that particular you can say the advertisement, right? So here you see social media platform audience overlaps. If you see Facebook users, so there is bare minimum, you can say unique to platform only 0.5%. All that means all the users which are using the Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, the majority of them are the common users, right? Because all among the, you can say from the 65% to 60% of the people, they are all social media users on this earth, right? And majority of them, they are the common people, right? So they are exposed to all the content which are available. And for the people who want to sell, see in the present scenario, people who want to sell their product or service, they are you can say using major chunk of their marketing budget for the online marketing of their product or services rather than the offline marketing of their product or service, right? So these basically the statistics that we see. So why in the machine learning I am talking about all these statistics? Because these are the companies who are making the most use of the machine learning algorithms. Can you tell me anybody? See, like on the Facebook, YouTube, or YouTube is recommending you the videos, Facebook is recommending you the friends. Similarly, Instagram is also recommending something for you. So all these platforms, they are making certain kind of recommendations to you, right? So when you do the tagging, then you get the friends recommendation. So you upload a picture, you get a message that you may have seen this picture, or they identify the faces in that particular picture, and you see they are recommending it may be this one XYZ or any person from your content, so you can tag them, right? So all these for every application you talk about, everywhere machine learning algorithms are being used. So here you see, when we talk about the machine learning, so direct, you are using, so in all your mobile phones, you see you have the Siri, you have Alexa, so you have the Google Home, so many applications you are using in the present scenario. Siri, what it is doing? What do we do with the Siri? Anybody? Ma'am, we use it for basic commands like open the TV, open the PC, and play a music low up and down of volume. राइट तो अब सीरी है, आप देखो एक सॉफ्टवेयर एजेंट है, इजंट इट? अब वो सॉफ्टवेयर एजेंट है, सीरी को स्पेनिश भी समझ में आ जाती है, जर्मन भी समझ में आ जाती है, इंडियंस का सारा इंग्लिश एक्सेंट भी समझ में आ जाता है, हर लैंग्वेज समझ में आ जाती है. सो वो क्या करता है सीरी? मैंने मोबाइल में एक अपनी एक इंस्ट्रक्शन दी, सीरी कॉल दिस पर्सन, राइट? सो वो सीरी क्या करता है, मैंने जो बोला उसने उसको मेरे एक्सेंट को समझा, राइट? फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया, कन्वर्ट किया लैंग्वेज में, और उसके बाद फिर उसको देखा कि अब वो जो लैंग्वेज में मैंने कोई एक स्टेटमेंट पास की है, वो जो इंस्ट्रक्शन दी है, उसको समझने के बाद व्हाट इट डिड इज इट परफॉर्म्ड दैट पर्टिकुलर एक्शन. जैसे आपने जो भी बोला स्विच ऑन द टीवी, तो सीरी ने क्या किया, आपकी जो स्टेटमेंट थी, जो इंस्ट्रक्शंस थी, उसको पहले समझा. समझने के लिए योर एक्सेंट हैज टू बी अंडरस्टूड. 8 बिलियन पॉपुलेशन की एक्सेंट को समझना is one of the toughest tasks, but all these applications, they are able to understand that, right? So what they have done, so what is the technology behind that, with the help of which they are able to understand the you can say your accent, converted it to a particular language, and after that able to perform that correct action also. You are using the Google translators, right? So these Google translators converting from Hindi to English, English to Hindi, from any of the languages that you talk about, right? So how it is doing it? You are using the banking, the total banking is online these days,
right? So we make all the payments through these online banking systems, through the UPI or different gateways that we have, right? And how they are performing, how they are able to identify that when you are doing certain tasks, you get a message that if this has not been done by you, you can communicate it to the bank to stop this particular transaction. Why you don't you get the same message every day? Why you get such kind of message once in a while? Because your behavior is being tracked. Maybe you have a habit of making small spendings, कि आप पिछले 6 महीने से या 1 साल से आपने कभी 10-20 हजार से रुपए से ज्यादा स्पेंड किया ही नहीं, लेकिन एक दिन जो स्पेंडिंग हो गई, मान लो कि 50,000 रुपए की स्पेंडिंग हो गई, सो दैट इज not normal, that is abnormal behavior. Maybe you had to go to your friend's wedding and you were doing the shopping, but the system has understood something has happened, so I should pass on an alert, right? So this alert we receive, so this is what the machine learning is doing to detect the frauds. So what abnormal behavior of the transaction. Then we talk about the search engines. So how come search engine that we all are using the Google search engine? How come the Google search engine is able to process the queries of all the billions of users in milliseconds, and then it is giving relevant result to all. आपने सर्च किया मशीन लर्निंग की बुक को, मैंने सर्च किया जावा की बुक, किसी और ने पाइथन की बुक, किसी और ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, किसी और ने health related. So everybody is getting the relevant result. How come this is happening and this is happening so seamlessly? Then, like I told you, the Facebook helps you to remember the names of your friends, identifying the images, or you can say the faces and the photographs that you have uploaded. Then when we talk about your Gmail has a segregation, right? So you have the promotional mails, you have the spam mails, you have the primary mails, right? Who is doing this particular task? How it is being categorized कि ये जो mail है ये spam mail है, ये normal mail नहीं है, which is not required, right? So how come these self-driving cars, they are working? Then you Netflix, everywhere they are passing the recommendations. You may have you have seen this movie, so you may like this movie also, right? So all this, see, we all are users of the machine learning applications. Each one of us who is using the smartphone, any of the applications that you are using, so in one way or the other, all these applications, they are using the machine learning algorithms, right? So how do these machine learning algorithms work? How does mathematics come into the machine learning? So let us understand and see the other applications. Like, so you want to classify whether this is a car or this is a dog. So many here we say in your Gmail accounts or any of your email accounts, how this classification task is being performed, that this mail is not a spam mail, spam or not spam, and accordingly, or it is promotional. So accordingly, all mails have been categorized and they have been put into the different categories. So this is the task that is being done by the classification algorithms in the machine learning. Then applications, here you say you are being tracked, all the people. So we have the surveillance cameras. These cameras, they are identifying the moving objects. We are moving all around and everywhere these objects are being tracked by these cameras, and based on their identities, after that, if something goes wrong, like say, let us say if something is happening, so the people are playing the games, or you can say the robots are there which are playing the games, so all the activities they are doing, so all the video tracking is being done using the machine learning, and they are being analyzed for the different kinds of behaviors. Then generating the captions automatically. You give your image and the caption will be generated for you. Like at the stage one, like you have these flowers, you gave the image, and now your system is telling that this flower is pink, white, and yellow in color and has petals that are striped.
right? So you give an image, it will generate the caption. You don't have to write a caption for yourself. So you can give your photograph, so the machine learning algorithm will help you to generate all these captions automatically. Translations from one language to another, right? So this is also an application of converting from all the text that you have, converting it from one language to another, like the Google Translator I've told you. So what do? You are converting from German to Spanish to Hindi to English, whatever language options you see, there is a long list of the languages which are being supported, and here the machine learning algorithms are being used to perform this particular task. Data centers. So it's not just about the social media applications that we talk about. So machine learning applications, machine learning algorithms are used in the manufacturing, in the finance, in the healthcare, as sir was discussing. So you talk of any of the domains, any of the fields, everywhere. Because see, can you tell me any field where there is no data? Yes, please. Anybody tell me any field where the people are working and there is no data? मैम मेनली मैम कंस्ट्रक्शन साइड है बस एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है वहां पर भी डेटा है क्या? एम्प्लॉयज का डेटा नहीं है? वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके लिए क्या मटेरियल आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो किस तरह से हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तब तो फिर मैम हर जगह पे डेटा मेरे So दिमाग that's में why तो ये I'm था saying ऐसी कोई, see, if there is something on this earth, right, that exists, so that means it has data. You talk of flora and fauna, you talk of the any part of the environment, everywhere data is there. So अभी जो है चंद्रायन हमने देखा कि चंद्रायन लॉन्च हुआ, right? So what the Chandrayaan is doing over there? Can anybody tell me? मैम द collecting चंद्रयान data. is collecting data about water bodies on the south pole of moon right now. Right? It So that, and it see, is the first satellite or man-made object to reach south pole of moon. राइट तो अब वो जो चंद्रायन हमने भेज दिया है, वो आप बता सकते हो कितना डेटा भेज रहा होगा एक दिन में? मैम नो आइडिया मैम, वो तो मैम जो सो वी जिन्होंने कांट बनाया वही काउंट ऑन इट. जानते हैं. नहीं, आप ये देखो, जस्ट इमेजिन दिस चंद्रायन, आप कोई भी आपके सर्विलियंस कैमराज हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, यस मैम. राइट? जितने भी कैमराज लगे हुए हैं चारों तरफ, कहीं भी बात करो, दे आर कलेक्टिंग डेटा 24/7. अब वो 24/7 अगर वो वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द वीडियो दैट विल बी देयर फॉर वन डे. एंड वी हैव स्पेंड सो मच ऑफ अमाउंट टू सेंड चंद्रयान, तो हमें तो वहां की बहुत ज्यादा डेटा चाहिए उसका. उस डेटा को हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट डेटा. अब वो डेटा इतना सारा, कैन वट एवर डेटा विल बी सेंड बाय द चंद्रयान, कैन वी एनालाइज दैट डेटा मैन्युअली? नो मैम. वी कांट डू दैट, right? So that is beyond the capability of the human beings to understand that particular data, to analyze that particular data, and to get the insights. And for that we need few algorithms, right? So we need certain methods which can do analyze that particular data at a faster pace, so that we can take certain decisions, right? So we can find out whether the objective, the mission with which we have sent this, but we have spent so much of amount, that mission can be accomplished or not, right? So you talk of any field, everywhere where there is data, there we can apply the machine learning algorithm, right? Here you see, this is what you do: object recognition, right? So this is all done with the help of the machine learning. Dependency, understanding the text, whatever you write, all everything that you are writing, how we are able to see. So you must have heard of that people are writing the novels, right, the complete books using AI. So how they are writing the complete books? See, what is the main objective? Whenever we have to write a small story,
What is the most important part while we are writing a story? सबने essays लिखे हैं ना, right? सबने ऐसे लिखे होंगे 10th 12th में. यस मैम, यस मैम. तो जब ऐसे लिखते हैं या कोई छोटी सी स्टोरी लिखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैम जितनी हो सके उतनी डिटेलिंग दे अपने मेन टॉपिक पे. मेन टॉपिक से इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट. जब आपने पहली लाइन से शुरू किया और जब आप मान लो कि आपने 100-200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है, तो लास्ट की लाइन तक आप उस कॉन्टेक्स्ट की बात करते हो जिसको आपने स्टार्ट किया था, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट का होता है किसी भी आर्टिकल में, कि इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो वो जो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है और वो हमारी मेमोरी में कब तक रहेगा, right? So all these things have to be understood by the algorithms, and this task is being done by the machine learning algorithms. The way the humans learn, we are saying, we are talking about machine learning. Learning का मतलब क्या है? How do humans learn? Ma'am, to remember and adapt to something. हाँ, तो how do we learn? कैसे learn करते हैं हम लोग? हम किसी हमें भी कोई चीज चीज को याद कैसे मेमोराइज रहता है? करके. हाँ, मेमोराइज कैसे होती है? by practicing same things. Yes, by practicing same thing. See, आपने घर में देखा होगा कि जब एक बच्चा जो है जब बोलना सीख जाता है तो हम उसको बार बार बोलते हैं पापा पापा या मम्मा 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 मम्मा. हम कितनी बार रिपीट करते हैं कि वो बोलना सीख जाए, राइट? जो मम्मा है वो मम्मा सामने है और उसको हम बार बार सिखाते हैं बोलो मम्मा मम्मा मम्मा. सो दैट मीन्स हम उसको बता रहे हैं कि ये जो उसको एक क्रिएचर दिख रहा है उसको मम्मा बोलना है, राइट? और वो उसको तब याद रहता है जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं. एंड दिस इज हाउ द लर्निंग स्टार्ट्स. कि छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि दिस इज एन एप्पल, उसको बार बार दिखाते हैं कि ये गोल गोल ऑब्जेक्ट जो रेड कलर की है उसकी ये शेप है, सो दिस इज एन एप्पल, राइट? उसको हर रोज बताते हैं और हर रोज पूछते हैं जब तक कि उसको अच्छे से याद नहीं हो जाता, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं? बार बार उसको दिखा रहे हैं, राइट? रिपीटिंग. सो आरंट वी ट्रेनिंग द किड फॉर द सेम थिंग? कि उसको पता चल जाए कि अगर उसको कभी भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखता है जो राउंड इन शेप है, रेड इन कलर है ऑलमोस्ट, एंड इट हैज सम ओवल शेप, सो child should be able to recognize that this is an apple, right? So अब हम जब एप्पल की बात कर रहे हैं and we are talking about context, if you start writing a paragraph, so apple, can you tell me what are the different contexts when I'm using the word apple? Ma'am, it is red in color, around a circle in shape, Right. and it's very sweet and juicy. राइट, ठीक है. तो अब जब आपने बात की इन सब फीचर्स की, तो हमने कहा कि इसका मतलब आप एप्पल एक फ्रूट की बात कर रहे हो, एप्पल कंपनी की बात नहीं कर रहे हो, isn't it? Yes, ma'am. So that means if I'm talking about apple, so apple एक कंपनी का नाम भी हो सकता है और एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है. कैसे पता चलेगा कि एप्पल कंपनी की बात चल रही है या एप्पल फ्रूट की बात चल रही है? अगर उस पैराग्राफ में, उस आर्टिकल में खाने पीने की चीजों से रिलेटेड बात चल रही है तो दैट मीन्स इट इज एन एप्पल फ्रूट. बट इफ that paragraph or that article is talking something else related to the gadgets, right? So that means we are talking about the Apple products or the Apple company, something like that, right? So when we are writing an article or when we are writing a book, so from where we start, and in a book of 200 pages, remembering that particular context and finishing the book after the 200 pages, so that particular context is kept in mind by the book writer. Now we are using AI to write that particular book, so that means AI requires something which can keep track of that particular context, that from where we started, and this was the most difficult part for training the AI while writing the books, right? So you can say we are the most important creatures. We call Homo sapiens, isn't it? Why we are called as Homo sapiens? Anybody?
You know what is Homo sapien? Humans are called Homo sapiens because of their ability to think and create things and their emotions. Right. So we are called the Homo sapiens. Homo sapien means intelligent beings. Right. So intelligent being means, so we pick up the word intelligence. So intelligence means we have the ability to learn, we have the ability to track, we have the ability to think. So many aspects are there for we can make the decisions, right? We can analyze the things, and we have five senses. The most beautiful part, the five senses that we learned about. We have eyes, ears, nose, tongue, skin. So all these five senses that we have, they are helping us to, along with the other abilities that the brain, the God has given to us, combined together, all these things make us the intelligent beings. Right? So because of all these abilities that we can think, we can act, we can learn, we can adapt, and all these things, they make us intelligent. And when we are talking about the artificial intelligence, so before the intelligent word, I'm using the term artificial. So what does it mean? Anything which is not in reality it is intelligent, but we are trying to make it artificially intelligent. And here we are talking about making the machines intelligent, artificial intelligence machines. तो मशीन्स के अंदर जब हम आर्टिफिशियली ये इंटेलिजेंट टेक्निक्स जब हम यूज करते हैं कि उनको हम अपने तरह बिहेव करना सिखा दें, मेक देम मिमिक लाइक ह्यूमंस, बिहेव लाइक ह्यूमंस. अब बिहेव लाइक ह्यूमंस का मतलब क्या है? कि जैसा हम बिहेव कर रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं, द वे वी स्पीक, द वे वी लिसन, द वे वी एक्ट, तो हमारा एक्शन कब क्या होगा? So all that kind of behavior, we are trying to put them into the machines. So that is what the complete domain of artificial intelligence is all about. And machine learning is one part where we are saying we are making the machines to learn. कैसे learn करें? जैसे humans learn करते हैं. Humans learn by observation, machines learn through the data. So the data, that's why we are talking about the data. जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छे से मशीन लर्न करेगी. जितना अच्छे से, जितनी डेटा की क्वालिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छे से मशीन लर्न करेगी. So we are going to get into the details step by step. Here you see, you must have seen the applications on the Facebook कि आप जो है उसको डाउनलोड करो, यूज करो, उसमें कि आप बचपन में कैसे दिखते थे या आप करंटली कैसे दिख रहे हो और आप 50 years के बाद कैसे दिखोगे. Such kind of applications, they all have been developed using the machine learning algorithms. Mimicking, you must have seen so many fake videos that have been created these days by mimicking the lips behavior, you can say, how the person is being speaking. So the words have been put, they have been updated using the machine learning or the deep learning algorithms, and you can say the fake videos have been created for the various celebrities and all. You must have heard of the recent fraud that happened. Artificial deepfake video was created for some popular celebrity, and she had to suffer a lot because of that. And the various movies, the robot, it's not just about the software industry that we talk about, it's also about the hardware. So everywhere, whether you talk of developing the softwares or software agents, or you talk about creating the hardware agents, everywhere machine learning algorithms are being used, right? And सबने देखी होंगी रोबोट मूवी, देखी है सबने, रावण भी देखी है, अभी जो तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया समथिंग, कोई न्यू मूवी आई है अभी. You must have seen all these movies. Yes? Yes, Yes, ma'am. ma'am. सबने देखा है. So what was Yes, there in these ma'am. movies? That was the height of the artificial intelligence. कि artificial Ma'am, intelligence में क्या? CGI effect. Yes, Ma'am, please. CGI effects. See, उसके अलावा जो आप बिहेवियर समझो कि अब क्या कर दिया, जैसे हम इमेजिन करते हैं रोबोट्स को, सो इन द फॉर्म ऑफ द हार्डवेयर ओनली, राइट? सो अब जो Okay, हार्डवेयर ma'am. हैं, They can rotate their head 360 degree, like राइट, that kind of things. हाँ, अब जो है उसमें क्या है कि अब मशीन्स के अंदर डिफरेंट काइंड की कैपेबिलिटीज भी एम्बेड कर दी और उनके ऊपर जो है वो स्किन लगा दी है ह्यूमंस की, राइट? एंड इट लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग ओनली.
अब वो जो उनका बिहेवियर है, सी अभी ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, किसी ने ये नई मूवी देखी है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया? एनीबडी हु हैज सीन? नो मैम। Okay, there was if you see that movie you'll see कि जो शाहिद कपूर के फादर की तबीयत खराब हो जाती है, उसमें क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है हीरोइन को, who was a robot. So the heroine in this movie is a robot basically, and take us to the hospital, right? So finally where she reaches, the hospital was it was not for the humans, it was a veterinary hospital, right? So that means what happened? Where was the gap? Can anybody tell me? Because it was a machine, it wasn't behaving like humans, so it was only doing what it was trained for. She was not trained for this thing. If you have missed a particular word, right, कि हमें जो है humans के hospital में ही जाना है, because this is very much clear to the humans. अगर घर में एक फैमिली मेंबर बीमार है तो उसको हम अगर हम कहेंगे चलो हॉस्पिटल लेके चलो, तो दूसरे पर्सन को डायरेक्टली समझ में आ जाता है कि हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना है. बट फॉर द रोबोट टू बी इन देयर डेली लाइफ, सो दिस पार्ट वाज मिसिंग. Understanding the context, right? So they are good at doing what they are being trained for. There lies a difference between the current status of the robots and the humans. We have generalized intelligence. So we are good at everything. But these robots, this complete industry of hardware, as well as this software, they are good at doing one particular task only. And creating such things in reality, what is being shown in these movies, right? All these sci-fi movies, what they are showing, this is beyond reach as of now. And with everything, what comes is the responsibility. So when we are using the AI, when we are using the machine learning, we have to be very responsible. So we have to be responsible. We cannot go beyond the human life. So we have to be very sensitive. If they are meant for a particular task, we should focus on that. So when we are creating the intelligent machines, so for everything with power, we say with power, there comes a responsibility. So we should be responsible while utilizing all these algorithms for the various kinds of applications, and we should use them wisely for the welfare of all. So it becomes our prime responsibility. So we have seen so many applications are there which we have been using. And when we are using all these social media applications, right, and we have the satellites which are generating, you see each and every domain that we talk about, everywhere data is being generated. And if you see this is basically a company which is every year producing this particular image and telling that data never sleeps. Human sleeps, but all data never sleeps. Why data never sleeps? You get up in the night at any point of time, you are using the Google, you are uploading the pictures on the Instagram. Anywhere in the world, somebody is using any of these applications, right? Every part of the world, right? Because we have the different time zones. Somebody is working at this time, somebody is sleeping at the other time, but the data is not sleeping, right? It is being generated tremendously. Here you see, if we Google users, 5.9 million users, they are performing the search every minute of the day. So that means if you let us understand the importance of 1 minute, 60 seconds. Within the 16 seconds, I'm saying in 1 minute, 5.9 million people, they are searching simultaneously. This is what I want to focus on, that simultaneously 5.9 million people are searching the Google search engine. 66,000 photos are being uploaded on the Instagram every minute. 1.7 million people, they are placing the content. That means they are uploading the post on the Facebook in 1 minute.
So this is the amount of data that is being generated in just 1 minute. And you can see if it is 5.9 million searches are being performed, you can multiply it and find out how many searches are being performed in one day. Email, 231.4 million messages are being sent via the emails. Amazon shoppers, see, Amazon shoppers are spending $443,000 every minute. This is the spending on the Amazon. Video streaming, viewers are spending 1 million hours of streaming is happening in just 1 minute. 500 hours of videos are being uploaded every minute on the YouTube. So why do we have to understand this? Because for everything we need the infrastructure. अगर इतने लोगों ने इतना डेटा अपलोड करना है 1 मिनट के अंदर, इतने लोग आ जाएंगे, राइट? सो इट्स लाइक कि आपको बोल दिया जाए कि आपको 1 मिनट के अंदर 5 असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देनी है. We can't do that. But machines are doing better, and they are doing all these tasks seamlessly. And this is because we have the infrastructure, we have the different kinds of very strong algorithms. The storage capabilities that we have, they are supporting us in doing this particular task. That's why all these social media applications, these big giants, they are able to survive in this digital universe, right? So since so much of data is being generated, this data has to be used by these companies. As I said, so the organization who is having the data is considered to be the richest organization. मैम आई Yes. हैव अ क्वेश्चन हाँ. मैम. मैम आप बार बार कह रहे हैं कि कंपनीज हमारा डाटा यूज करेंगी, तो हम उसका मतलब क्या नहीं, हुआ? देखो, वो कंपनीज हमारा जो डेटा यूज कर रही हैं वो किस लिए यूज कर रही हैं, उसको एनालाइज करती हैं, राइट? सो एनालाइज करने के बाद हमें प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करती हैं और सर्विसेज रिकमेंड करती हैं. एनालिटिक्स के लिए यूज करती हैं वो. ओके मैम, ओके, ओके, थैंक यू मैम. ओके. Right? So because the data is never slipping, right? So the amount of data, you can see how it is growing. So zettabytes of data is being grown. We are here in 2024, right? And now it is expected that by 2025 175 zettabytes of data will be generated. जब इतना डेटा जनरेट होगा तो उस डेटा को हमें एनालाइज भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, फिर सबसे पहले उस डेटा को क्लीन भी करना है. So for that we require different kinds of strong algorithms which can process this data at a fast pace. So we define this particular data as the big data, and according to the Gartner, this big data is high volume, velocity, and variety. So this is the information asset that demands cost-effective, innovative forms of information processing. So हमें क्या चाहिए? Cost-effective solution चाहिए. That should be innovative way. There should be some innovative way for processing this information. For what purpose? For getting the insights and for the decision making. So decision, हमें कुछ useful information मिलेगी तभी कंपनी उससे related कोई decisions ले पाएगी, and which can be useful for making the profits for any of the organizations. So what we have, we talk जब हम big data की बात करते हैं तो कंपनीज को जब काम करना है उस big data पे तो उसको 4 characteristics में define कर देते हैं कि आपका जो data है हमें उसको understand करना है, because जब हमें machine learning algorithm यूज करनी है तो सबसे पहला इनपुट उसमें डेटा है. So we have to understand what kind of data it is. Accordingly, we are going to choose the algorithm for analyzing this particular data. अब वो डेटा जो है आपका small data है या large data है. If it is small data, we can use the machine learning. If the data is very big, do we need to apply the deep learning algorithms? राइट. सो अब वो जो डेटा हमने स्टोर करना है वो कैसे होगा? अगर लार्ज डेटा है तो उसके लिए किस में क्या स्टोरेज होनी चाहिए? बिकॉज जब भी हमें डेटा को प्रोसेस करना होता है दैट हैज टू बी लोडेड इनटू द मेमोरी. सो ऑल दैट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स वी विल हैव टू सी only after we know what is the volume of the data. So the volume of the data is measured in terms of the number of rows. अगर हम डेटा को मान ले कि एक एक्सेल शीट में डेटा स्टोर है, राइट? Everybody knows about the Excel sheets?
यस, एक्सेल शीट सबको Yes, पता ma'am. है Yes, ना? ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो किस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज, मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा। अब बिलियन यूजर हैं, बिलियन यूजर है तो मतलब बिलियन रोज, हर एक यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन हमने प्रोफाइल स्टोर कर रखा है, राइट? सो बिलियन रोज हो गई हमारे पास। अब हर एक यूजर के बारे में हमने क्या डिटेल स्टोर की है। सो कॉलम वाइज अगर हम देखेंगे तो वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या फीचर्स हैं। तो हमारे कितने कॉलम्स हैं? सो हमारा जो डेटा है ना, डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है। थिन डेटा है या थिक डेटा है। थिक डेटा है मतलब नंबर ऑफ रोज भी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बहुत ज्यादा है। थिन डेटा का मतलब है नंबर ऑफ रोज बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज कम है और नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। तो डिफरेंट टाइप्स का जो वॉल्यूम है उसको एनालाइज करके वी हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिजाइनिंग द मॉडल्स फॉर गेटिंग द इनसाइट्स। देन वी टॉक अबाउट द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या है डेटा की। अब जो स्ट्रीमिंग डेटा है, राइट, स्ट्रीमिंग डेटा जो वीडियोस आ रही हैं, सो द स्पीड विद विच द डेटा इज कमिंग। सो डू वी नीड टू एनालाइज द डेटा ऑन द गो कि जैसे ही आ रहा है हमको साथ के साथ एनालाइज करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि वो डेटा जो है एक बार आ गया, हमने स्टोर करके रख दिया और उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। सो जिस स्पीड से डेटा आ रहा है, हमने देखा क्रिकेट में क्या होता है, जिस स्पीड से बॉलर ने बॉल फेंकी उसी स्पीड से बैट्समैन को हैंडल भी करना होता है, राइट? अगर उसने हैंडल नहीं की तो मिस होगा। मिस में कुछ भी हो सकता है, वो आउट भी हो सकता है, उसको भी लग भी सकती है और कुछ और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। सो दिस इज हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जैसे डेटा आ रहा है, अब उस डेटा को हम कैसे हैंडल करें कि जो एनालिटिक्स हमें करना है उस डेटा पे वो ऑन द गो करना है, ऑन द फ्लाई डायनेमिकली हम उसको करेंगे, या फिर हम उसको स्टैटिक फॉर्म में करेंगे कि हमने स्टोर करके रख लिया और उसके बाद हम उसको डेटा को बाद में एनालाइज करेंगे। सो दिस इज वेयर वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओलैप सिस्टम्स, ओएलटीपी सिस्टम्स, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, जैसे कि हम बिलिंग करा रहे हैं सभी स्टोर्स पे, वो सिस्टम्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। देन वी हैव ओलैप सिस्टम, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, कि ये जो बिलिंग्स करा रहे हैं, जैसे कि आप लोग सारे ऑर्डर्स करते हो, मैकडीज पे ऑर्डर जाते हैं, पूरा दिन ऑर्डर्स चलते रहते हैं। अब मैकडी तो पूरी चेन है, सो where their data is going, जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा कहाँ जा रहा है। सो ऑल दैट डेटा से दे मस्ट हैव सर्टेन पॉलिसी कि एक दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद उनका सारा का सारा जो डेटा है वो किसी वेयर हाउस में जाएगा। अब वो वेयर हाउस में चला गया है तो मान लो कि हो सकता है मंथली, वीक, और यू कैन से आफ्टर 6 months और 1 year, कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है वो देखना चाहती है ओवरऑल डिफरेंट जोन वाइज। से दे वांट टू चेक आउट कि हमारा इंडिया में ईस्ट जोन में या वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में किस तरह से हमारे प्रोडक्ट की सेल्स है, कहाँ हमारे सेंटर्स ज्यादा चल रहे हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है। सो दे कैन एनालाइज दैट डेटा only if it is put together. When they are put together, they have their own policies and this data is being stored into the warehouses, and this warehouses में जो data store होता है उसको जब analyze करते हैं, so that is called as online analytical processing, OLAP systems, राइट? सो इसी तरह से रियल टाइम एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं कि डेटा जो है जैसे जैसे आ रहा है उसी स्पीड से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, राइट? देन वी टॉक अबाउट द वेराइटी इन द सेंस कि अब हमारा जो फेसबुक है उस पर हम कुछ भी अपनी पोस्ट भी लिख सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी हैं। अब जो एल्गो आप टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए यूज करोगे, सेम एल्गोरिथम मे नॉट गिव गुड रिजल्ट्स व्हेन वी आर एनालाइजिंग द इमेजेस, और इट मे नॉट बी सुटेबल ऑल्सो। सिमिलरली अब वीडियोस के लिए हमें अलग से कोई एल्गोरिथम चूज करनी पड़ेगी कि आप किस टाइप की वीडियोस को देखते हो या स्टडी करते हो। सो वी नीड टू हैव सम अदर। अब उनका जो स्टोरेज है वो भी अलग अलग होगा। जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी हमारी यूज हो रही है टेक्स्ट के लिए, वी कैन नॉट यूज the same storage for the images efficiently or for the videos efficiently, because the text is you can say lighter as compared to the videos and the images. So videos and images, they occupy more space as compared to the text. So उनको जब हमने सर्च करना है, जब रिट्रीव करना है डेटा, उनको फास्ट रिजल्ट्स देने हैं यूजर को। कि आपने कभी देखा है जैसे आप लॉग इन करते हो, इमीडिएटली आपके जो प्रोफाइल में जितने भी वीडियोस थे, जितने भी फोटोग्राफ्स थी, इमीडिएटली लोड होकर आ जा रही है। सो वो कैसे हो रही हैं? बिकॉज वी हैव द कंपनीज हैव यूज्ड कोरिस्पॉन्डिंगली जो बेस्ट
एल्गोरिथम्स उन्होंने यूज किए हैं फॉर रिट्रीविंग द डेटा. At every point they are trying to use the best which is most suitable for that variety of the data. Then we say veracity. Veracity means certainty of the data. So we call it garbage in, garbage out, GIGO. राइट. सो इसका मतलब क्या है कि अगर डेटा अच्छा नहीं होगा तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं होंगे. अगर डेटा खराब है, आप सोचो कि अगर आपके जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही है हमारी, अगर हमारा जो लेट्स से कि हमने किसी को ब्लड सैंपल दिया या यूरिन सैंपल दिया, उसने टाइमली वो सबमिट नहीं किया लैब में, तो वो डैमेज हो गया. अगर वो डैमेज हो गया तो हमारे रिजल्ट्स क्या ठीक आ सकते हैं? वो नहीं आएंगे. राइट. अगर वो सही क्वालिटी का ब्लड सैंपल जाएगा तभी रिजल्ट सही आएंगे. सो दिस ब्लड सैंपल इज नथिंग बट ए डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर लैबोरेटरी. राइट. उसी को स्टडी करने के बाद दे आर गोइंग टू डिराइव वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द डिजीजेस और नॉट. अगर वो सैंपल डैमेज हो गया तो इसका मतलब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं आएंगे. एंड ऑन द इंटरनेट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, डू वी हैव एनी कंस्ट्रेंट कि हमें क्या लिखना है और क्या अपलोड करना है? एनीबडी? आप लोग इतना सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, इज देयर एनी कंस्ट्रेंट कि आपको जो है ट्विटर पे जाके किस तरह से लिखना है या फेसबुक पे कैसे पोस्ट डालनी है? मैम अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं होनी चाहिए उसमें, अब्यूजमेंट नहीं होनी चाहिए उसमें. राइट. उसके अलावा अगर हम उस पार्ट को छोड़ दें, राइट, उसके अलावा तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो. बेसिकली हाँ मैम. बेसिकली हाँ. जैसे आपकी जो फोटोज हैं, अगर हम अब्यूज और ये सब चीजें जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिविटी पार्ट को छोड़ दें, उसके अलावा तो आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज का. नो मैम, मान क्योंकि लो मैम कि आपको जैसे ऑनलाइन मान में लिया बहुत लोग मैम आपस में लड़ भी लेते हैं, लेकिन वो उसमें अब्यूजमेंट नहीं करते हैं, तो मैम इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती इस कारण से. राइट. तो इसका मतलब कि आपने जो लेट्स से कि आपको कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया कि आपने जो फेसबुक पे आपने जो पोस्ट लिखी है वो आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, या आप उनकी शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करो. आप यस हम मैम, लोग इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है हमें. कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता. अब जब हम कह रहे हैं कि कंपनी को जो टेक्स्ट डेटा है उसको एनालाइज करना है, तो अब वो इतने छोटे छोटे हमने शॉर्ट फॉर्म्स आजकल इतने सारे बना दिए हैं, तो उस डेटा को वो कैसे स्टडी करेगा, कैसे एनालाइज करेगा? जिसका मन किया उसने अपने हिसाब से अपने इंग्लिश के वर्ड्स बना दिए और उसी तरह से उसको लिख दिया. उसके अलावा इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमने कोई बात हिंदी में लिख दी, कोई बात इंग्लिश में लिख दी और उसको मिक्स करके लिख दिया. So we are basically writing English on the platforms, right? तो हमारा जो डेटा है बेसिकली, उस डेटा को क्लीन करने के लिए millions of dollars are being spent by the companies in cleaning that particular data, so that understanding that particular data, and that data is not trustworthy. We say the internet is the most untrustable source of information. So unreliable source of information unless this work that we talk about that is being published, agar wo koi journals hain, koi research publications hain that have passed through a particular channel, only we can rely on that particular data, otherwise hum kisi cheez pe rely nahi kar sakte. Right. So millions of dollars are being spent by the companies in understanding the truthful you can say getting the trusted data out of this data that we are being uploading. Right. So these are the basically the four ways which are being used, and the most important ones are the volume, velocity, and variety, which are used to characterize the data when we have to deal with the when you are given a particular task to analyze the data. So you have to understand this particular data in terms of what is the volume of that data, and in terms of variety, where does it fit in, कि आपके पास text data है, image data है, या video data है, और velocity क्या है, क्या आपके पास most of the time we are using the as a student, as a learner, we are using only the static data. राइट. हम स्ट्रीमिंग डेटा को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक डेटा, एंड इन coming days we are going to analyze only the static data using the machine learning algorithms. कि मतलब वो डेटा हमारे पास एक बार आ गया, वो फिक्स्ड है, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा अनलेस हमने दोबारा से डाउनलोड ना किया हो. राइट. लेकिन डायनेमिकली उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा. So that is basically the static data that we are going to
work on. So we have the variety of sources from where the data is coming, like we have the social media, web browsing data, weather satellites, Internet of Things, IoT devices we are having. Then we have the various kinds of databases, we have archives, transaction details of the customers, TV, video games, smartphone, everywhere. So from each, you can say these are also the limited sources that I have mentioned. So you have a large variety of the sources of data from where the data is coming up. And then we say that information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. So अगर हम उसको डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे, then it is of no use. Without analytics, we cannot utilize that particular data. That means there is no point of creation or storing this particular data if we are not making use of it. So what kind of analytics are being done by the companies? Let us understand कि companies किस तरह के analytics करती हैं. Right? So what is big data analytics? It is the process of collecting, examining and analyzing large amount of data to discover the market trends, insights, patterns that can help companies make better decisions. So everywhere we are talking about, the ultimate goal is to improve the decisions. To improve the decisions, that means which can help in increasing the profitability of the business, right? So that is, see, if you're talking, if you say I'm doing business, that means it is about making profits. Business is all about making the money, and how to make the money, what all efforts we can do so that we are able to increase the profits. And here we are talking about analyzing the data that we have about anything. We have customers, we have the data. We have a product, we have data. We have the service, we have data. Every activity that we do has data associated with it. So what are the various kinds of analytics which are being done by the organizations? The first one, descriptive analytics. So the descriptive analytics is basically done on the existing data. हमारे पास मेरी कंपनी जो है 20 साल पहले खोली गई थी, उस कंपनी के पास 20 साल का डेटा इकट्ठा हो गया है, right? So we analyze that particular data. So जो meteorological department है, वो इतने सालों से environment का data, right, weather data जो है उनके पास stored है. So how do they tell us कि ऐसा इतनी ठंड 20 साल में पहली बार पड़ी है, इतनी बारिश 20 साल में पहली बार पड़ी है, दिसंबर जो है सबसे कम ठंडे वाला मंथ था in the last 10 years. How does these weather department they tell you, right? How do the stock market it is working? Stock market is having billions of billion size data, or you can say the petabytes of data the stock market is having. So how they are understanding, okay, within few seconds the market is going up and down, right? So how they are doing? So they are understanding. So what do they make predictions कि अब जो है next जो stock है वो उसके rate गिरेंगे या ऊपर उठ जाएंगे, या फिर we should buy a stock or we should sell a stock? How it is happening, how these decisions are being made. So we are analyzing the data. So the descriptive analytics is about analyzing the existing data, the historical data. We analyze the historical data and try to understand what has happened. क्या trend था कि हमने पिछले 5 साल का डेटा जो है, let's say we can analyze the data year wise, we can analyze the data day wise, week wise, month wise, in any of the ways as per the your applications requirement. कि हमने उसको analyze करके बताया क्या trend क्या है, कि month wise let us say कि पिछले 5 साल से हर बार जून में क्या होता है, क्या trend होता है, right? So what has happened? So descriptive analytics is used to answer the question what has happened, right? उसको समझने के बाद हम क्या करते हैं? We go for the diagnostic analytics. Diagnostic मतलब why it has happened कि हर, let's say there is a company, let's take one example. एक कंपनी है जो टॉयज वगैरह जो आपके लेट्स से द प्ले स्टेशंस वगैरह बेचती है, राइट? एंड द कंपनी ऑब्जर्व्ड कि हर पिछले 5 साल में क्या हो रहा है कि जून के महीने में और अक्टूबर नवंबर में जो आपके प्ले स्टेशंस हैं और उनसे रिलेटेड जो गेम्स हैं वो सब की सेल्स बढ़ जाती है, राइट? पीक बढ़ रहा है उसका. तो अब कंपनी ये जानना चाहती है कि उस महीनों में ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो है उनकी सेल्स बढ़ जाती है. लाइक व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर,
डॉक्टर को आप बताते हो मुझे कोल्ड है, मुझे कफ है, थोड़ा सा फीवर है और कुछ हेडेक भी हो रहा है, तो इस टाइप से आपने उनको सिम्टम्स बता दिए। वो सिम्टम्स क्या है? बेसिकली द डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर सबसे पहले पूछता है, हाँ जी बताइए क्या हुआ। जब तक हम उसको कुछ बताएंगे नहीं, वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता। फिर वो देखता है कि अच्छा थोड़ा सा कोल्ड है, थोड़ा कफ है, थोड़ा फीवर है, ओके, वो फिर देखता है कि बहुत आजकल बहुत फ्लू फैला हुआ है, आप ऐसा करो, अगर ये ठीक 4 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ये कुछ टेस्ट करवा लेना। टेस्ट का मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक। सो डायग्नोस्टिक हम क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू डेवलप द रीजनिंग व्हाई इट हैज हैपेंड। व्हाई इट हैज हैपेंड, कि जो फीवर है वो अगर 5 दिन में नहीं ठीक हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या क्या, और क्या रीजन हो सकता है? सो सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, की कंपनी की सेल्स जो हैं अगर जून में बढ़ रही हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और जून और अक्टूबर नवंबर में बढ़ रही हैं, तो व्हाट कुड बी द रीजन? डायग्नोस्टिक करने के बाद पता चला कि जून में क्या होता है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, इसीलिए क्या होता है, पेरेंट्स उनको गेम्स वगैरह दिला देते हैं उनको बिजी रखने के लिए। Another thing, like in India, what happens is during the month of October and November, we have large number of festivals, festival season hai, and they are during the festivals, all these things are also used for the gifting purpose, right? तो इसका मतलब हमने रीजनिंग डेवलप कर ली कि जून के महीने में क्यों सेल्स बढ़ रही हैं और अक्टूबर नवंबर में क्यों सेल्स बढ़ रही हैं। सो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रेडिक्टिव। तो इसका मतलब फ्यूचर में क्या होगा? डॉक्टर ने देख लिया, ब्लड सैंपल के जो भी आपकी रिपोर्ट्स आई उसमें देख लिया, तो ही मेक्स सम कंक्लूजन्स कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए अब जो है हो सकता है ये रीजन है, तो ऐसा करो आप एंटीबायोटिक ले लेना, राइट? अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, अगर ये रीजन था तो फ्यूचर में भी क्या ट्रेंड रखा? लास्ट 5 ईयर से सेल बढ़ रही है, इसका मतलब चांसेस हैं। सो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। हमने प्रोबेबिलिटी बताई है यहाँ पे सारा मैथमेटिक्स आएगा, राइट? सो प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी, क्योंकि गारंटी नहीं हो सकती किसी भी चीज की, कि प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी सेल बढ़ेगी इन 2 मंथ्स में। अगर सेल बढ़ेगी तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डॉक्टर ने क्या किया? प्रिस्क्राइब कर दिया, आप जो है ये 5 मेडिसिन ले लो, बेस्ड ऑन दैट एक्टिव, कि बाद में बुखार बढ़ भी सकता है, इसीलिए आप जो है क्या करो? एंटीबायोटिक्स ले लो। हम यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में एक कंपनी क्या बताएगी? क्योंकि जून में चांसेस हैं सेल बढ़ने के, गिव सर्टेन डिस्काउंट्स, कुछ ऑफर्स निकाल दो, राइट? कि एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी सेल हो जाए, कि आप कोई प्ले स्टेशन लेने आ रहा है तो उसके साथ 2 गेम्स पे कुछ ऑफर दे दो, राइट? सो द कंपनी प्लान्स अकॉर्डिंगली, राइट? कि जिससे कि हमारी सेल, क्योंकि नॉर्मली पीपल बाय, तो उसमें क्या होगा, अगर हम ऑफर्स देंगे तो और सेल्स बढ़ जाएंगी, right? So this is the prescriptive analytics that is being done, that based on, we start from the descriptive, then we go for the diagnostic. So what has happened, why it has happened, what will happen in the future, that we do in the predictive analytics, kya possibility hai. So everywhere when we are talking about the possibility, that means there is a probability, and probability के बेस पे ही हमारे सारे बिजनेस डिसीजन हो रहे हैं, कि जिस चीज की हायर प्रोबेबिलिटी है, accordingly we are performing the prescriptive analytics. And then in these days cognitive analytics is being also done. Cognitive analytics क्या हो रहा है कि जो call centers हैं, the people who are there part of the call centers, they are talking to their customers 24/7, how they are interacting with the customers, understanding their behavior, उनके जो call records का data है, जो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, they are trying to understand the cognitives, emotions को understand करना. So now the companies are moving towards the cognitive analytics, right? So here you have seen the different kinds, every kind of analytic that you will see, it is coming to any of these particular category. अब इन एनालिटिक्स को करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं? सो हाउ डू वी डिजाइन द मॉडल? तो हमारे पास डेटा आ गया, अब डेटा को एनालाइज करना है, तो दैट विल डिपेंड अपॉन किस टाइप का एनालिसिस करना है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू चूज द एल्गोरिथम्स. So here comes the role of the mathematicians, right? So what we have here, we say we have the data, then mathematics, right? So what this math is doing here,
to get the insights. So, what is data science? It is the science of applying mathematics to the data for generating the useful insights with the help of the technology. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटा था उस पे हमने अपना मैथमेटिक्स लगा दिया. मैथमेटिक्स लगा के with the help, because see, if the data is very small, we can directly we can do the task manually, but these days we are talking about the zettabytes of data. So the amount of data has grown beyond the capability of the human beings to understand and process this particular data. So that's why we are taking the help of the technology to get the useful insights. And this is all about, we say this is called as data science, right? And now, since everywhere we are using multiple terms, we use the data mining, we use machine learning, we use data science, somebody is talking about statistics, right? So how all these terms, they are related to each other, where do they fit in? So here you see the data science is basically a multidisciplinary field with the two circles that you see, two bigger circle. Here it is, we have the one major discipline is the statistics, another major discipline is the computer science, right? And along with that, so within that, what we have, the data mining. So data mining is basically considered to be a process for making the, or you can say this, it is the process for discovering the data, for discovering the useful insights, for discovering the useful patterns, for getting the insights. And in that particular process, what we are doing, we are using the other processes, we are using the other techniques. So here you can say whatever has been written with the help of a red color, that is basically a discipline. Green color is indicating the methodology. The blue color is indicating the process, and the black color is indicating the application. So here you see where we are using AI is basically the artificial intelligence technique, and machine learning is a subset of, you can say machine learning is a type of artificial intelligence techniques which helps in making the machines which can learn and work themselves, right? So we are trying to make the machines who can learn themselves and grow themselves, right? And they can take the decisions. And deep learning is again a subset of the machine learning, right? So you can say deep learning comes when machine learning, the capabilities of the machine learning, they come to a लिमिट. जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होने लग जाती है, उसके बियॉन्ड हम क्या है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं. परफॉर्मेंस कैसे डाउन होने लग जाएगी? क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, व्हेन दे वर डेवलप्ड दे हैड अ लिमिटेशन, कि उस टाइम जो डेटा होता था उसका साइज एक लिमिटेड था. तो उस डेटा का साइज जब बहुत बड़ा हो जाता है, बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट, देन वी गो फॉर अप्लाइंग द डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स. Then we have the predictive modeling, where what we are using, so we are using the statistics, right, for doing the predictive modeling. Then database is basically a software application which is used for storing and processing of the large amount of data. There we have been talking about the big data. And you see the complete data science is a interdisciplinary field where we are using all these different kinds of methodologies for analyzing the data, for the predictive you can say the predictive analytics. So predictive analytics, that means what will happen in the future, or if there is something unknown, what it could be. कि अगर हम किसी का फोटो दे दें तो वो बता दे ये किसका फोटो हो सकता है, इज इट अ कैट, इज इट अ डॉग. अब हमारे मेल बॉक्स में हर रोज नई मेल्स आ रही हैं, सो it is able to make a decision that this could be a spam mail or non-spam mail. Sometimes it happens कि हमारी जो important mail है वो भी spam में चली जाती है, हम ढूंढते रह जाते हैं, right? Because the algorithm had not seen that particular kind of mail in the past, but it felt it because it looked like something जो past में वो जो थी वो spam mail थी, तो इसलिए उसने नए वाली जो mail आई, हमें पता था वो important है, लेकिन मशीन को तो उतना ही सिखाया गया था कि अगर इस टाइप की कोई मेल आए तो उसको spam में डालना है. So whatever it learned, it assigned the label to it that it is a spam mail, it is not a non-spam mail. So accordingly the machines learn, they are being trained and do the particular task. Here you see the timeline, राइट. सो अब ये टाइमलाइन क्या है, कहां से शुरू हुआ सफर? 1943 से. हम आज
2024 में कितने साल हो गए 1943 से लेके 2024 तक? यस प्लीज, एनीबडी? मैम 101 ईयर्स हो जाएंगे 1923 से। तो इतने सालों के बाद हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, और जो न्यूरल नेटवर्क्स है दैट इज वन ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट वाज डेवलप्ड इन 1943 एंड दैट हैज बिकम मोर रेलेवेंट आफ्टर 100 years. तो आप सोचो, मैकलॉग एंड पिट जिस बंदे ने ये क्रिएट किया था, हाउ शार्प ही वाज, राइट? उसने जो कुछ डेवलप किया वो 100 years के बाद भी इतना रेलेवेंट है, और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। आज के टाइम में कोई भी चीज, एक कहते हैं ना कि कोई मोबाइल लेके आओगे, वो 2 महीने 3 महीने बाद उसका मॉडल पुराना हो जाता है, राइट? हम बात करें एल्गोरिथम की जो 100 साल पहले बनाई गई थी, एंड इट हैज बिकम मोर रेलेवेंट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, right? And we are talking about, so the deep learning algorithms are all about the neural networks only. और आज का टाइम हम बोलते हैं कि deep learning algorithms का era है. Majority of the work is being done, all the applications are being developed using the deep learning algorithms, and the core algorithm behind the deep learning is the neural networks, which was developed 100 years back, right? And here you see, we are talking about artificial intelligence now, and the term artificial intelligence was coined in 1956. 1956 में कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म नाम बना दिया गया था, एक टीम ने बना दिया था, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट artificial intelligence now, right? And here we say that the Alan Turing once said that I will be only say, I will only agree to this कि जब कोई मशीन जो है ह्यूमंस को फूल कर देगी, और कोई ह्यूमन ये नहीं बता पाएगा कि ये काम मशीन ने किया है या ये ह्यूमन ने किया है। एंड टुडे वी आर लिविंग इन दिस पर्टिकुलर डिजिटल एरा। वो 1950 की बात थी जब कंप्यूटिंग एसीएम के एक कॉन्फ्रेंस में ट्यूरिंग ने ये पेपर पब्लिश किया था, that is called as the Turing test, right? And after that, you see, in 1974, the back propagation algorithms was developed, and then the exploratory data analysis in 1977. And here you see, statistics is equal to data science. 1997 में who questioned this particular thing? क्या हम data science की बात करें तो are we really talking about data science? Yes, we have just seen that. Data science is a multidisciplinary field with the merging of both the statistics and the computer science. And there we were talking about from data mining to knowledge discovery in data science, right? And then, so the whole research community is working towards that for developing the Hadoop systems, where they were talking about the big data, MapReduce paper, right? And developing the Spark. Here you see 2007 scikit-learn. This is a library in Python which is being used for designing the machine learning algorithms. जितनी भी machine learning algorithms है आपकी Python में, उसकी library develop हो गई थी 2007 में, right? And these are the various terms when we talk about the big data, the data lakes, art of data science. So everybody is talking about, कितने सालों से लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, right? And here you see in 2012, so Davenport Patil, they said the data scientist, this is the sexiest job of the 21st century, right? And then talking about the deep minds. So आज के time में you people know there are, we are talking about online games. Online games में the software agents, they are we play the games with the software agents, right? And we know that how many times we are able to fool the agents. Most of the time these agents, they are winning the games, right? So AlphaGo was one of the agents which was able to win the game. So आज के time में जितने भी software agents हैं, they are being trained so much. आप जितने भी games खेलते हो, online games आप खेलते हो, वहाँ पे when we are talking about कि getting the rewards for playing the games, सब जगह जो है machine learning और deep learning algorithms use हो रही हैं. So everywhere. And you see, and it was in 2019, it was said that Python is one of the most used programming language in the world. And there is no looking back. Still it is. In 2024 also, Python is the most
used programming language in the world. And we are going to do all the practicals of the machine learning using the Python programming only. Right? And here you see this is the complete data mining science process that we talk of, how we develop the model. So from where we start? First we start with the business understanding कि हम करना क्या चाहते हैं. हमारे पास डेटा आएगा, सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन होते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट डेटा एक्विजिशन एंड अंडरस्टैंडिंग. अब हमारे डेटा के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से डेटा आ रहा है. देन वी टॉक अबाउट डेटा पाइपलाइंस कंप्लीट. जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ घर पे पानी कहाँ से आता है. Yes, can anybody tell me from where the gas, if you have a gas pipeline or you have a water pipeline, from where the water is coming? Ma'am, it is supplied by government and by government resources. शुरुआत कहाँ से होती है मैम? वाटर मान बॉडी लेते से हैं कि पानी की. हाँ, और मैम गैस की नेचुरल गैस बॉडी प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वहां से प्लांट्स जो अब तो गैस प्लांट से डायरेक्ट तो लैंड नहीं होता हमारे यहाँ पे पाइप कोई भी, इसमें पूरा सिस्टम करना पड़ता है, पूरी पूरा कनेक्शन नेटवर्क है. बिठानी पड़ती है. राइट, वी से कि हमें जैसे अब घर में भी अगर हम हमारे पास जो पाइप्स होती हैं अगर वो छोटी पड़ जाती है तो हम उसमें एक जॉइंट लगा के एक लंबी पाइप बना लेते हैं. राइट, हमने उसको एक तरफ से टैप में लगा दिया और दूसरी की तरफ से जॉइंट लगा लगा के हम गार्डन तक पहुंच गए कि वो पूरी की पूरी हमारी पाइपलाइन बन गई. राइट, जिसके थ्रू हम वाटर प्लांट्स को वाटर करेंगे. सो सिमिलरली वी हैव अ डेटा पाइपलाइन कि हमारे जो सोर्सेज हैं वहां से डेटा आएगा. फिर जो है एक स्टेप से जो डेटा आया, द आउटपुट ऑफ दैट बिकम्स द इनपुट फॉर द अनदर. राइट, सो this is how from we start from the source and we reach to the destination, and that is called as data pipeline. Then we talk about the environment कि लोकल में काम करेंगे या क्लाउड पे काम करेंगे. एक्सप्लोरेशन और क्लीनिंग करनी है कि पहले हम समझेंगे ना डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो हमारा डेटा जो है, लेट्स से जो एक्सेल शीट में हमारा डेटा है, राइट, अगर वो प्रॉपरली रोज और कॉलम्स में डिजाइंड है, उनके लिए फिक्स है कि पहले में नेम आएगा, देन एज आएगी, देन रोल नंबर आएगा, देन जैसे हमारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन है. राइट, जो बैंक में हमारा जो डेटा स्टोर्ड है दैट इज बेसिकली ऑल स्ट्रक्चर्ड डेटा. राइट, देन सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो ना तो वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड है और ना ही पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है. सो हमारा जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है मोस्टली XML फाइल्स में होता है या JSON फाइल फॉर्मेट में होता है. देन वी टॉक ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे आपने फेसबुक पे पोस्ट लिखी, I was talking about नहीं कि कोई कंस्ट्रेंट है कि नहीं, I was talking in this particular context. आपने कुछ भी लिख दिया, आपने उसके लिए कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो आपने अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में उस कंटेंट को लिख दिया, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. जो आपकी इमेजेस हैं दैट इज आल्सो अनस्ट्रक्चर्ड, आपकी जो वीडियोस हैं दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो जो आज के टाइम में हमारा जो 90% डेटा है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. और इतने सालों से जो हमारी टेक्निक्स, जो मेथड्स बने हुए थे, जो एल्गोरिथम्स डिजाइंड थी, जो डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज डिजाइंड थी, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे पास सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा होता था, तो पिछले 50 साल से लोग RDBMS में काम कर रहे हैं, MS Access में काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑल डेटा वाज स्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली. लेकिन अब कुछ सालों से फॉर द लास्ट लेट्स से फॉर द लास्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स से क्या हो गया, मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड. अब जो हमारे पास चीजें स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए बनी थी वो अनस्ट्रक्चर्ड को तो हैंडल कर नहीं पा रही. सो दैट लेड टू द you can say need for designing and developing new algorithms, new storage technologies, and the different algorithms for handling the data, for the different algorithms for handling the semi-structured or the unstructured data. Right, and after data acquisition and the understanding, we move on to the modeling, feature engineering, and training and validating and evaluation. So we will be discussing all these things in detail, and from this, after developing the model, we go for the deployment. Our deployment का मतलब है कि आपने जो application बनाई थी that will be used as a web service, या आपने कोई web application, कोई website बनाई है, या mobile application बनाई है, या फिर that will be deployed in the form of reports, chart, dashboard, किसी भी तरह का कोई भी काम हो सकता है. And आफ्टर डिप्लॉयमेंट इट हैज टू हैव द कस्टमर एक्सेप्टेंस. भाई जिसके लिए वो बनाई है उसको पसंद भी तो आनी चाहिए. आपने एक गेमिंग ऐप बना दी, अपलोड कर दी गूगल स्टोर में, कोई डाउनलोड ही नहीं कर रहा.
वन थिंग इज अवेयरनेस, सेकेंड थिंग इज आपने अवेयरनेस कैंपेन तो चला दी थी लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है क्योंकि आपने यूजर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड ही नहीं किया होगा कि उनको किस चीज की जरूरत है। सो लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, राइट? एंड हियर यू सी how do, here we were talking about modeling. How do we develop a model? What is a model? This model is nothing but a mathematical formulation. Here you see what we have data, and this data is used to design this particular model. हमारे पास डेटा था बहुत सारा, लेट्स से हमारे पास बहुत सारा इमेजेस का डेटा है, राइट? लेट्स से उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के फोटोग्राफ्स हमने इकट्ठे कर लिए। अब मुझे एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है जो ये बता सके कि भाई अब जो नया मैंने इमेज दिखाया है उसको, वो जो इमेज है वो एप्पल का है, बनाना का है, ऑरेंज का है, या कौन से फ्रूट का है, राइट? सो दिस मॉडल इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल फार्मूला, राइट? अब ये मैथमेटिकल फार्मूला जनरेट करने के लिए, राइट, एंड कि अब हमने कहा कि लेट्स से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? यस, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? किसकी इक्वेशन? लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। नो आइडिया। y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है, mx प्लस c होता है ना, राइट? अब मैं कह देती हूं कि आप जो है इस इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू w0 x0 प्लस w1 x1, उसके बाद का भूल जाओ, ठीक है? तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि w1 x1 दिस इज mx, w1 की जगह मैं m लिख दूं? कैन आई डू दैट? यस मैम। ठीक है, अब यहां पर जो है ये x0 को मैं 1 मान लेती हूं और w0 को मैं c मान लेती हूं। Got it? Here I'm saying w0 is equal to c, x0 is equal to 1 plus w1 x1, this is mx. जब लाइन की इक्वेशन होती है तो y की वैल्यू, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y की वैल्यू कैसे डिटरमिन करते हैं? x से, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जैसे x चेंज करेंगे वैसे y की वैसे। वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन Yes, वो y की वैल्यू डिपेंड करेगी w1 और w0 पे। एग्री? यस? यस मैम, यस मैम। यस मैम। भी जो स्लोप है और जो कांस्टेंट है उन दोनों पे ही डिपेंड करेगी ना कि y की वैल्यू क्या है। यस मैम, यस मैम। राइट? वो कैसे डिटरमिन करते हैं? मैम बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, राइट? द आप जैसे क्वेश्चन। हाँ, लाइक इन मैथमेटिक्स you find out the values of these constants using by solving the mathematical equations. In machine learning, we find out the values of w0 and w1 with the help of the data. Getting my point? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैम राइट? कांस्टेंट और मैम x पे। राइट, सो सी x क्या होगा? x जो है, जो इनपुट डेटा है उसकी वैल्यू है, राइट? अब हमारे पास जैसे एक्सेल शीट में बहुत सारा डेटा है, 50 रो है, 100 रो है, या मैं छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, राइट? सो उसमें ये जो डेटा है, जो x y और z जो भी वैल्यूज होंगी वो x1 में जाएगी, और फिर मैं बार बार उस डेटा को यूज करके मैं फाइंड आउट करूंगी कि w0 और w1 की वैल्यू क्या है, राइट? बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर हम w0 और w1, यहाँ पर जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो x0 एंड x1 दे आर कॉल्ड एज द इनपुट पैरामीटर्स, राइट? ये हमारा इनपुट है, ये हमारे पास पहले होगा, और w0 और w1 की वैल्यूज को हम डिटरमिन करते हैं, और इनको डिटरमिन करने के लिए ही हम एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, right? So this is what is being shown over here, that the algorithm we are using on the left hand side, this is used to determine the type and parameter values of the mathematical function. ये जो w0 और w1 है क्या? बेसिकली जो हमारे डेटा में x0 x1 अप टू xn जो है इनपुट फीचर्स
कंसीडर करते हैं कि मान लिया हमारा, जैसे हम एप्पल का एग्जांपल ले रहे थे, x0 है, that refers to the shape of the apple, right? x1 refers to the color of the apple. Similarly, x3 refers to the weight of the apple, right? अब एप्पल की इमेज को डिटरमिन करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है? दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द वेट. अगर W0 की वैल्यू ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब x0 जो फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर x0 की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये कम इंपॉर्टेंट फीचर है. सो दीज W's over here, they refer to the importance of the input features for this particular model. और वो इंपॉर्टेंस कैसे डिटरमिन होती है? दैट इज बीइंग लर्नड थ्रू द डेटा. हम बार बार मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट? ट्रेनिंग करने के बाद इन पैरामीटर्स की वैल्यूज आ जाती हैं और फिर हम क्या देखते हैं कि अगर हमने ये पैरामीटर वैल्यूज हमने दे दी तो, और हमने फिर प्रिडिक्शन किया y का, अगर y की प्रिडिक्शन में उसने डिटरमिन कर लिया प्रोबेबिलिटी को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्पल इज 90%, तो इसका मतलब हमारी वेट वैल्यूज कहीं ना कहीं ठीक है. अगर उसने गलत दे दिया तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं वेट्स की वो ठीक नहीं है, हमारे मॉडल को ठीक से लर्न नहीं किया. अब ठीक नहीं लर्न किया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कि जो हमारा डेटा है, राइट, वो डेटा ही ठीक नहीं है, राइट. जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ठीक से नहीं लिखी गई, right? So हमारा it will all, the kind of model that we are able to develop, that will depend upon the kind of data we have. That's where we were calling it as GIGO, garbage in garbage out. अच्छा डेटा होगा. मान लिया कि आपका डेटा skewed है, कि आपके पास 100 रिकॉर्ड थे, ठीक है, 100 रिकॉर्ड्स में से आपके 80% रिकॉर्ड्स तो एप्पल के थे और 20% रिकॉर्ड्स तो आपके ऑरेंज के थे. सो कैन वी थिंक ऑफ कि जो ऑरेंज आएगा उसके लिए हमें सही से प्रेडिक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि मॉडल ने तो सबसे ज्यादा क्या देखा है? एप्पल देखा है. कि अब घर में बच्चे को हम सिखा रहे हैं, आप बार बार घर में बच्चे को 10 में से 8 बार तो आप बच्चे को एक एप्पल दिखा रहे हो और 2 बार आप ऑरेंज दिखा रहे हो, तो क्या आप ये कह सकते हो कि बच्चे को कभी दोबारा ऑरेंज दिखाएंगे तो वो सही से बता पाएगा ये ऑरेंज है? नो मैम. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. When I'm talking about, जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, राइट? जब हम मशीन की बात करते हैं तो सेम ऑब्जर्वेशन, सेम लर्निंग इज बीइंग गिवन टू द मशीन्स वाया डेटा, क्योंकि मशीन नहीं देख सकती ना, मशीन को हम डेटा के थ्रू दिखाते हैं सारी चीजें. तो मशीन्स लर्न थ्रू द डेटा, ह्यूमंस लर्न थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, राइट. अब मान लिया कि बच्चे को आपने हर रोज तो रेड एप्पल दिखाया था, एक दिन आपने ग्रीन एप्पल दिखा दिया, तो बच्चा बता पाएगा? नो मैम. क्यों नहीं बता पाएगा? इसमें किसकी गलती होगी? मैम बच्चे की या पेरेंट्स की? मैम पेरेंट्स की, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कलर्स के एप्पल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. राइट. तो इसका मतलब अगर हमने डेटा में ऐसा सैंपल डाला ही नहीं कि एप्पल जो है लाल की जगह ग्रीन भी हो सकता है, तो अगर मॉडल उसकी प्रिडिक्शन गलत कर देगा तो इसमें मॉडल की तो कोई गलती नहीं है. लेकिन अगर मॉडल हमारा फिर भी बता दे, इसका मतलब कि अगर वो उस शेप को पहचान ले अच्छे से और कलर की वेटेज अगर कम है उस मॉडल में, ठीक है, बाकी पैरामीटर्स की वेटेज सही से उसने कैलकुलेट कर रखी है, तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स कि उसने ग्रीन वाले एप्पल को भी पहचान लिया, जबकि हमने उसको सारे दिखाए तो रेड एप्पल ही थे, right? So this is where we talk about the good models and the bad models, right? And here you see the models that we talk of, it is nothing but the mathematical formula in machine learning, right? And here we were talking about the prediction कि अब वो जो हमने next sample दिखाया है, so that is apple, orange और banana, that is basically the prediction कि हमारी जो मशीन है वो हमें बता दे कि ये जो नई इमेज हम मशीन को दे रहे हैं वो किस चीज की है. तो जिस टाइप की हमने उसकी ट्रेनिंग की होगी, अगर हमने उसकी अच्छी डेटा पे ट्रेनिंग कर रखी है, मॉडल को अच्छे से बना रखा है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक से तरीके से बना है, वेट्स सही तरह से ट्रेन होके और उसके सही ऑप्टिमल वेट्स आ गए हैं, तो हमारा मॉडल की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी.
Okay, so this is all we talk about when we, where is the mathematics, where is the data, where is how the machine learning is talking about. Okay, so who is a data scientist? Person who is better at statistics than any software engineer and better at software engineering than any statistician, right? And it is basically a unicorn that bridges maths, algorithms, experimental design, engineering, communication and management skills, but they aren't specialist in any of the aspect. वो सिर्फ गैप को ब्रिज करते हैं. And you see math is everywhere. Without mathematics there is no existence of machine learning. तो क्या करता है डेटा साइंटिस्ट? वो ह्यूमन प्रॉब्लम को समझेगा and it will transform that problem into the computer problem. Then it will also understand the mathematics. कि अब हमने कहा कि ये तो, अब ये पीछे हम बात कर रहे हैं कि ये मैथमेटिक का मॉडल है, इसको प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे. कैसे करेंगे? Unless the data scientists tell you where this mathematical model, this formula fits in, you won't be able to understand that how we can use this formula for making the predictions, right? So this is the role of the data scientists or the machine learning expert also, you can say. Okay, so it will convert, it helps us in understanding the mathematics and transform it into the English such that we are able to utilize those formulas for some, or you can say for some kind of predictions or some kind of problem solving. And here you see some comics that you who must have seen these days, right? We found this correlation in the data, mathematical correlation we find, and now everyone take a razor. And here you see the mathematical concepts that you have studied, right? So where, what concepts are being used for what kind of machine learning algorithms, like your vector calculus, your linear algebra, it is used in the regression. Then you have the dimensionality reduction, density estimation, then you have classification. So everywhere, all your concepts of the probability and distribution, analytical geometry, optimization, matrix decomposition, all these concepts are being widely used, right? So without the understanding, see, if you have a good understanding of all these concepts and you start learning the machine learning, you develop this particular skill, right? So nobody can be better than you, because it is more of mathematics. Nobody can do the best job except the mathematician, if you also develop the skill of machine learning and the data science. So here you see importance of math topics needed for machine learning. 35% linear algebra is being used in the machine learning. Then 25% of the probability theory and the statistics. Then we have multivariate calculus, 15%, algorithms and complexity, again 50%, and rest is only 10%. So here you can see 90% we are talking about the mathematics and rest is only 10%. So you can understand how important is the the role of the mathematician in the machine learning. So Robbie, stop misbehaving or I will send you back to the data cleaning, right? So data cleaning is a very big job, right? So as I've told you, millions of dollars are spent by the companies in cleaning this data, because there is no restriction on the users for uploading or the data of any type, right? Writing the post, writing the tweets, uploading the images, videos, etc., right? So that's the most difficult task is there. Unless the data is being cleaned properly, you cannot expect anything to be coming out good by applying the machine learning models. So whatever is the best, whatever best machine learning algorithm you apply, unless the quality of data is good, you cannot have the good results. So as I've already told you, so artificial intelligence. So I think we will move further in the next class, sir. Sir? Yes. हाँ जी मैम.
सर नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करें। आई थिंक आज के लिए बच्चों के लिए काफी हो गया। हाँ, आज के लिए काफी है। ओवरडोज नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्लास को वेडनेसडे की 6 बजे के रखेंगे ना। ठीक है सर। So ठीक है। if you have any queries, you can ask. Anybody having any queries, you can ask. No, ma'am, I don't have any query, ma'am. Anybody else having any queries? No, ma'am. Okay. No, ma'am, not for today. Okay. Good evening, ma'am. Yeah. Good evening. Good evening. Ma'am, I have a question. Yeah, please. Ma'am, we are learning so much about AI in this nowadays. Yeah. As Elon Musk also said that this is very dangerous. As we all know, there are many hotels in which only robots are working. So Yeah. already no job by this so much of technology. Also, it's very useful. We all know, but मतलब ये it is going to be very fruitful for the future. This AI. Right. See, the thing is, Ma'am, may I answer this question? Yeah. Yes, please. मैम पहले के टाइम पे जब कंप्यूटर आए थे न्यूली हमारी कंट्री में, तो हम लोगों ने तब भी ये बात कही थी कंप्यूटर जॉब्स शायद खा सकते हैं बहुत लोगों की। बट मैम हमें भी पता, हमने भी देखा मैम कि कंप्यूटर्स ने उल्टा और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए काम किया है, और मैम हमारा बहुत सारा वर्क फास्टर और मोर एफिशिएंट करा है। Right. But at the same time, AI is more harmful than a computer. AI और computer का कोई comparison नहीं है. AI is going to hold a lot of jobs. That is true, but at the same time, it is going to create less jobs. So it is a controversial take. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट मैम, पहली चीज मैम, पहले कंपैरिजन में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। सेकंड थिंग मैम, चेंजेस के हिसाब से जो नहीं बदलता है मैम, उसका डिस्ट्रक्शन 100% होता है। और मैम एक प्रकार का एक गुड बेटर चेंज है मैम। अब मैम आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता मैम, उसे बहुत ओल्ड क्लास कहा जाता है। उस इंसान से मैम लोग बड़ा अजीब व्यवहार करते हैं मैम। पहले के टाइम पे तो सोशल मीडिया होता नहीं था मैम। चेंजेस आते हैं तो मैम हमें भी उनके साथ साथ अडेप्ट करके अपने आप को बदलना चाहिए मैम। यही मैम एक सोशली मैंने देखा है मैम, जहां तक मैंने देखी है दुनिया। Yes. See, to some extent, he is right. See, whenever something comes up, right? कोई नई चीज आती है ना, सबसे पहले तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है ह्यूमंस के साथ, कि वी आर वेरी फियरफुल ऑफ चेंज, राइट? हम चेंज से डरते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से डरते हैं कि हमने इतने सालों में ये टेक्नोलॉजी सीखी, हम इस तरह से काम करते हुए आ रहे थे। जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि भाई हम इतने सालों से इस तरह से काम करते आ रहे हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि क्या था कि हम चेंज करने से डर रहे थे कि अब हम नई टेक्नोलॉजी कैसे सीखेंगे, हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। और हम जैसा मैम यहाँ पे मेरे साथ में मैम किसी ने कहा था कि हम कंप्यूटर और एक बहुत डिफरेंट चीज है मैम। मैं कहूंगा कि मैम कंप्यूटर पे हम पहले काम करवाया करते थे, अब कंप्यूटर खुद काम कर रहा है। तो मैम एक तरीके से हमारा कंप्यूटर एडवांस हो रहा है, और मैम हमें जो उसके ऑपरेटर की नीड थी वो हट रही है। तो मैम इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद जॉब चली जाए, बट मैम फिर भी मैम एआई को ऑपरेट करने की नीड पड़ेगी, क्योंकि मैम हम ह्यूमंस को इतना डर है आज भी कि कहीं एआई ओवरटेक ना कर ले। जैसे कि मैम आजकल हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, जब चैट जीपीटी आया था मैम, तब लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए थे कि मैम वो तो न्यू एआई भी बनाने के लिए कैपेबल है। राइट। तो अब क्या हो रहा है, लोग चैट जीपीटी को यूज करके नए टूल्स बना रहे हैं, नए बिजनेस जनरेट हो गए हैं, राइट? सो इसका मैम मतलब पहले के टाइम पे मैम गिटहब का यूज करा करते थे लोग, लेकिन आजकल के टाइम पे लोग चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं। पर मैम इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैम कोई इशू हो रहा है। सी देखो, एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक ट्रांजिशन फेज आता है, राइट? ये अब जो है वो ट्रांजिशन फेज शुरू हो रहा है, राइट? तो इसीलिए सबको लग रहा है कि जितने भी ये एआई के टूल्स आ रहे हैं, दे विल वाइप आउट द ह्यूमंस। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, एंड दिस इज, ये सब साईफाई मूवीज में ही हो सकता है कि कभी भी जो मशीन्स हैं वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लग जाएं, राइट? सो वी कॉल दिस एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्रिएट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ, राइट? कि ऐसे रोबोट्स बन जाएं जो बिल्कुल बिहेव करेंगे ह्यूमंस की तरह, ह्यूमंस का थॉट प्रोसेस। सो ह्यूमंस का थॉट प्रोसेस ह्यूमंस को ही नहीं समझ में आया तो रोबोट्स कैसे समझ पाएंगे उस चीज को? वो सिर्फ उतना ही काम करेंगे जितना उनको ट्रेन किया गया है,
और मैम सबसे Right. बड़ा मेजर कॉज है आज के डेट में मैम अनएम्प्लॉयमेंट का, वो है मैम ओवर पॉपुलेशन। तो मैम हम एआई को कैसे ब्लेम कर सकते हैं मैम कि वो मेन अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज है? Right. कुछ See this. कुछ Yeah. डिस्कशन जो है आगे क्लासेस के लिए छोड़ देते ठीक है, अच्छा, okay sir, okay sir. So we'll continue the discussion for the next class. Okay, thank you so much everyone for your patience. Thank you. थैंक यू मैम। Ma'am, Yeah. very well you have explained. Thank you so much for the lecture. But I have a question कि जैसे इलॉन मस्क ने भी कहा कि 40% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो एआई ले लेगा, और एआई ने भी खुद एक रोबोट ने बोला था कि आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका यूज नहीं है, कि या वो इफेक्टिव नहीं है, हमारे लिए उसने कुछ किया नहीं है। हम मान रहे हैं इस चीज को कि हाँ, जो जहाँ 10 लोग करते थे वहां एक कंप्यूटर ने बहुत आसान कर दिया है, हमारी लाइफ को बहुत ईजी कर दिया है। लेकिन फिर भी ओवर पॉपुलेशन कैसे कह सकते हैं मैम? ओवर नहीं पॉपुलेशन अंजलि, सी मैम अंजलि, मैम यू आर इसका भी राइट। आंसर एक मैं कर मिनट सकता हूँ मैम। हार्दिक, एक मिनट रुको आप, ठीक है। अंजलि, एक्चुअली क्या है कि देखो, आई एग्री विद यू कि जो काम ह्यूमंस कर रहे थे उनकी बहुत सारे काम जो है मशीन्स करने लगी हैं। बेसिकली अब क्या हो रहा है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्किल रिक्वायरमेंट। जैसे टाइम के साथ ना स्किल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि पहले किस टाइप की, जब एआई नहीं था तो कौन से टाइप की स्किल्स चाहिए थी फॉर गेटिंग द जॉब्स। अब जो है, अब एआई टूल्स आ गए हैं, तो अब हमें किस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है फॉर गेटिंग। सो एक टाइप की जॉब्स खत्म हो रही हैं तो नए टाइप की जॉब्स जो हैं क्रिएट हो रही हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है कि जब एक टाइप की जॉब्स खत्म हो रही होती हैं और दूसरे टाइप की अभी हमें पता भी नहीं चल रहा होता, और उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, राइट। सो दिस इज अ ट्रांजिशन फेज कि नए टूल्स आ रहे हैं, राइट। सम पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड क्रिएटिंग। अब क्या है कि आपको एक पीपीटी बनानी है तो एआई का टूल आ गया है, लेकिन उस एआई टूल को यूज करके पीपीटी बनाना कितने लोगों को आता है? Getting my point? So the skill requirement has changed. Now the people will come up with the new tools, और यू कैन से नई स्किल रिक्वायरमेंट आएगी कि अब आप जो है नई एआई टूल को यूज करके कितनी अच्छी पीपीटीज बना सकते हो। जो एग्जिस्टिंग टूल है पीपीटी बनाने का, वो मान लो कि नो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना के दे देता है, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती। प्रेजेंटेशन स्लाइड, मुझे लेक्चर बनाना है आज, तो उसके लिए मुझे 50 स्लाइड चाहिए, 100 चाहिए, लेकिन वो एआई टूल तो नहीं बना के दे रहा। तो उसके लिए अब एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है जो मेडिएट करेगा, वो उस टूल को कितने अच्छे से यूज करे कि वो दूसरों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, जब भी कोई नई चीज आती है, ट्रांजिशन होता है। उस ट्रांजिशन फेज में जो आप कह रहे हो, बहुत लोगों की जॉब जाती भी है, लेकिन उसके साथ साथ अब वो जो पर्सन है जिसकी जॉब गई है, अगर उसने टाइम के साथ, सी इट इज अ टेक्नोलॉजी इरा, अगर हम अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी, समवेयर वी आर गोइंग टू लूज। सो दैट्स व्हाई वी, चार्ल्स डार्विन थ्योरी जो है हर इरा में फिट होती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, right? Survival of the fittest applies everywhere. Yes, ma'am. Getting my point कि आपको सिंपल अपने आप को अपग्रेड करना है, अपस्किल करने की रिक्वायरमेंट अब ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन हो रहा है ना, वो बहुत फास्ट पेस पे हो रहा है, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी भी फैशन की तरह बदल रही है, इट हैज बिकम अ फैड। और मैम पहले की तरह जैसे मैम हम लोग रॉ मीट खाया करते थे, फिर मैम हमने फायर का यूज करा। मैम फायर अगर मैम हमारे कंट्रोल में ना रहे तो मैम हमें बर्न भी कर सकती है, बट मैम वही कंट्रोल में रहे तो उसका बहुत ज्यादा यूजफुल, वो बहुत ज्यादा यूजफुल भी हो जाती है। तो मैम एआई भी एक फायर की तरह ही है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल होगी तो ऑब्वियसली वो हार्म करेगी मैम, और मैम कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाती है तो हार्म करती ही है हमें। राइट, राइट। सो नवीन, यू हैव अ क्वेश्चन? नवीन? I want to share my thoughts. I am an electrical and electronics engineer, and I am technical assistant. I will say that the artificial intelligence is a more used in our engineering fields, such as neuron technology. When we find out how to connect the circuits, many circuits are not possible to connect in 1 minute with mind. So AI control all the things with AI. So these things, machine learning and artificial engineering, are most widely used in the electron technology. Is also adapted in the most of buildings, so that it's made a clone, a perfect a clone, and find out the problems and the disturbance, and solve this
on these points only. So it is a most useful things in the environment. Right. So there are large number of fields that we will say where these machine learning algorithms and artificial intelligence techniques, they were not being used at all. Yes. And we have, as I said, there is lot of data in every field. But because of the Yes. exposure, right? So now in every field, these artificial intelligence techniques are being used for solving the complex problems. Right, so it is Yes, ma'am. coming to a savior Because for solving because hard many problems. because of many problems are not solved quickly by humans. So artificial intelligence make easier to solve these problems. Right. Agree. Okay. Okay, ma'am. Okay, Dheeraj sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. So we come to the end of that. Okay. So see you next class. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.